Motion moved. There are three amendments by Sri Ella Maram Karim ji, Dr. John Britas ji and Dr. V. Siudasan ji for reference of Energy Conservation Amendment Bill 2022 as passed by Lok Sabha to a select committee of the Rajya Sabha. Members may move the amendments at this stage without any speech. Sri Ella Maram Karim ji, are you moving your amendment? Not moving. Not moved. Dr. John Britas ji, are you moving your amendment? Sir, I am not moving concerning his past deeds of taking on communal forces. Thank when you. He was in Bihar. So amendment not moved. Dr. V. Siudasan ji, are you moving your amendment? I am not moving, sir. Not moved. So all the three amendments, they are not moved. The motion for consideration of the bill are now open for discussion. Dr. Abhishek, Manu, Singhvi ji. Mr. Chair, sir, as I rise broadly in support of the bill, I am nonetheless struck by some very unique features of the Indian legislative process and, more importantly, the governance process in the context of passing legislation. But first, sir, with your permission, I have said it before in previous governments, and I repeat it, a minor procedural issue about amendment bills which carry roughly 80 to 100 amendments, as this one does. This amends the Energy Conservation Act of 2001 with about 90 odd amendments. It is too much, sir, to ask the legislative department, irrespective of government, to give us the act originally with brackets and footnotes as to what it would look if this amendment was passed? The idea of going and locating each of these 90 amendments in the original act is a nightmarish exercise for somebody who wants to go into the detail. And it's a very small thing. It is done by publishers who publish books of new acts each year or twice a year with amendments. I think every legislator who wants to make a significant focused contribution should be blessed with a copy of the original act showing the amendments as they would look if the amendment bill is passed. And this is something so simple, but unfortunately has never been done for decades. Sir, let me therefore begin by complimenting the government broadly on the initiative taken and say that the virtuous parts of the bill are virtuous, are desirable. A, it brings in building codes for energy efficient, non-fossil fuel based constructions. So non-fossil based constructions will be encouraged and therefore building codes have been amended or will be amended. 2, it is wider because it includes residences, commercial buildings, industrial spaces, etc., etc. So it is all inclusive, no exclusions. Third, it expands the concept of carbon footprint emanations from buildings, vehicles, vessels, appliances, and a much wider subset of human activity. Again, no exclusions, that's good. Fourth, it creates agencies, not quite clear fully, but yes, it does, for issuing carbon credit certificates, a very important aspect on which I'll touch in a moment. It seeks to create an ecosystem to buy and sell these carbon certificates at all levels, supposedly under a scheme, and there is some problem there which I will address you in a minute. And of course, lastly, it penalizes with steep penalties those who don't comply with the requirements of reducing carbon footprints in all these activities, constructions and non-construction areas. But sir, equally, as in the well-known 1960s spaghetti Western movie, The Good, Bad and the Ugly, the good and the virtuous comes with the not so good and perhaps the ugly. The first phrase coming to my mind as I holistically see the original 2001 Act, which this bill seeks to amend, is that India is truly an over-legislated, under-enforced country. We tend to think that all our problems stop with legislation, and we go back clapping and backslapping ourselves on the back that we have passed legislation. And I'll make that good in a moment.
The second striking facet is the hiatus between promise and performance, between preaching and practice, between kathani and karni, which I will show you with the help of some statistics. और मैं समझता हूँ कि मैं और मंत्री महोदय अलग अलग किताबें तो नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि आंकड़े तो अलग हो नहीं सकते अलग अलग किताबों में, लेकिन मेरे आंकड़े कुछ और हैं, भिन्न हैं जो इन्होंने आंकड़े दिए उनसे. I have no doubt, sir, about your good intentions. That's why I said I broadly rise in support of the bill. But if you don't see the larger picture, the holistic picture, if you don't see the ground reality, then you know that old saying about good intentions. The path to hell is also paved with good intentions. तो ये कौन से विरोधाभास है, ये कौन से विपरीत चीजें हैं, पहलू हैं. मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं, और सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये सच्चाई दर्शाते हैं. पहला बिंदु, अनुच्छेद 3 से 13 इस बिल का, ये जो संशोधन वाला बिल है, इसका 90% या 80% हिस्सा है. अधिकतम हिस्सा यही 10 क्लॉजेज हैं. ये इसकी आत्मा है, इसका शरीर है, और ये डील करते हैं ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी से, जिसका एक बहुत विशाल ब्यूरोक्रेसी बनाई गई है. वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री महोदय हैं, उसमें बहुत वरिष्ठ सेक्रेटरीज हैं 8-9 डिपार्टमेंट्स के. लेकिन मैं ध्यान से देखा तो खोदा पहाड़ निकला चूहा. क्यों? क्योंकि अभी हमारी 25वीं पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट है. उसमें लिखा है कि पिछले वर्ष फाइनेंशियल ईयर 21 में यही ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो आपके संशोधन बिल का सबसे स्पेशल फोकस है 10 प्रावधानों में, उसका खर्चा सिर्फ 54% ऑफ बजट एस्टिमेट था, यानी आधे से थोड़ा ज्यादा, 54%. और उसके अगले वर्ष में फाइनेंशियल ईयर 22 में 52% है फरवरी 2022 तक. तो जब आप 50% सक्षम हैं इसका इस्तेमाल करने में, तो इतनी विशाल ब्यूरोक्रेसी बनाना, इतने सारे अधिकार क्षेत्र देना इस बिल में ऐसी संस्था को जो अपने बजट एस्टिमेट का भी आधे या आधे से थोड़ा ज्यादा खर्च कर पा रही है, और ये आपकी एक मेन एजेंसी है इस काम करने के लिए. दूसरा बिंदु, साफ ऊर्जा जो है, इसका मकसद क्या है, जिसको आप नॉन फॉसिल या साफ ऊर्जा कहते हैं. कार्बन फुटप्रिंट को कम करना, यही आपका रियो में 1992 में उद्देश्य था, यही आपका क्योटो में 1997 में था, यही आपका पेरिस में 2015 में था, यही आपका कोपेनहेगन में 2021 में था, और यही अभी जब गए थे शर्म एल शेख में 2022 में, कुछ हफ्तों पहले था. लेकिन फिर कथनी और करनी में विपरीतार्थक चीज क्यों है? कुछ आंकड़े चौंकाने वाले हैं. आप इतनी बात कर रहे हैं, अभी मंत्री महोदय ने इतनी चीज बताई आपको, लेकिन सब्सिडी साफ ऊर्जा पे आप कम कर रहे हैं, और टैक्सेस साफ ऊर्जा पे आप बढ़ा रहे हैं. ये विरोधाभास नहीं है? जीएसटी सोलर प्रोजेक्ट्स पे 5% से 12% कैसे हुई 2021 में, और हम ये प्रावधान पास कर रहे हैं 2022 में. मैं जानता हूं कि आप आत्मनिर्भर की बात करते हैं, मैं जानता हूं, मानता भी हूं कि चीन से आयात कम करना चाहिए, इसलिए आपने साथ साथ बेसिक कस्टम्स ड्यूटी भी बढ़ा दी है सोलर पैनल्स पे. जीएसटी अलग बढ़ाई है, बेसिक कस्टम ड्यूटी अलग बढ़ाई है आयात पे. लेकिन आपको ये पता है कि बहुत सारे निर्माता हमारे जो आयात के कंपोनेंट्स हैं इन सोलर पैनल्स के, वो बाहर से मंगवाते हैं. तो आपके बटन दबाने से या आपके आयात के दर बढ़ाने से आत्मनिर्भर नहीं हो जाता है भारत. आपकी साफ ऊर्जा का अभियान सफर करता है. तीसरा बिंदु, 2022 में अत्यंत महत्वपूर्ण मैपिंग इंडिया एनर्जी पॉलिसी 2022 एक रिपोर्ट आई थी, अभी की बात कर रहा हूं, इसी वर्ष की. उसमें बड़ा चौंकाने वाला फिगर मैंने पाया कि रिन्यूएबल सेक्टर, जिसको आप नॉन फॉसिल सेक्टर कहते हैं, उसकी सब्सिडी 2017 से 22 के बीच में 60% कम हुई है, 59% टू बी एग्जैक्ट. 60% सब्सिडी आपने कम की है उस सेक्टर की जिसको आप प्रोत्साहित करना चाहते हैं. एक अपवाद है इसमें, मंत्री महोदय ने सही कहा, वो एक अपवाद है, बिजली वाली व्हीकल्स का आपने बहुत बढ़ाया है, लेकिन नॉन रिन्यूएबल एनर्जी इलेक्ट्रिक व्हीकल से बहुत बड़ा ज्यादा व्यापक कॉन्सेप्ट है.
इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक सीमित नहीं है। चौथा बिंदु, गलत ऊर्जा फॉसिल फ्यूल में भी सब्सिडी कम हुई है, कोल, ऑयल इत्यादि। लेकिन आपको मालूम है कि आज भी फॉसिल सेक्टर को नॉन फॉसिल रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के तुलनात्मक रूप से 9 गुना ज्यादा 900% मोर सब्सिडी मिलती है। आप कैसे बनाएंगे इस देश को फॉसिल फ्री? पांचवा बिंदु, आपके 7 महारत्न हैं पीएसयूज में। वो जब नए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको भी ध्यान रखना पड़ता चाहिए कि फॉसिल फ्यूल के आधार पर इन्वेस्टमेंट न करें। उनके इन्वेस्टमेंट 2021 में और 2020 में 11 गुना ज्यादा हुए हैं उन क्षेत्रों में जहां फॉसिल फ्यूल का ज्यादा इस्तेमाल है बनिस्बत रिन्यूएबल एनर्जी नॉन फॉसिल। आज भी माननीय आपके आंकड़े थे जरूर, लेकिन 70% भारत कोयले के आधार पर चलता है। 70% आपके वित्तीय संस्थान, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रुपया वितरण करते हैं वो फॉसिल और कोयले के आधारित प्रोजेक्ट्स पे 300% ज्यादा करते हैं बनिस्बत रिन्यूएबल एनर्जी के प्रोजेक्ट्स को। ये सब चीजें आपको सिर्फ कानून बनाने से हल नहीं होंगी, ये सब चीजें आपको फोकस करना पड़ेगा, कानून हो या एग्जीक्यूटिव ऑर्डर हो। आज भी सोलर पैनल्स 80% इस देश में आयात होते हैं। आपने उनकी कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी है, आत्मनिर्भर बात सही, लेकिन आपके पास क्षमता कहाँ है निर्माण करने की देश के अंदर? ये सब आंकड़े हैं, ये स्पष्ट हैं। 2022 की इंस्टीट्यूट ऑफ एनर्जी रिपोर्ट जो आई है उसमें कहा गया है कि हमारा जो घोषित उद्देश्य है, माननीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की है कि हम डबल करना चाहते हैं, 30 से 40 बिलियन हमारा इन्वेस्टमेंट होना पड़ेगा, बिलियन एज इन बी यूएस डॉलर्स पर ईयर, अगर हमारा 2030 का प्रधानमंत्री द्वारा घोषित उद्देश्य 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी होने का है। आज हमारा उससे आधा है। 2030 में 7 साल बचे हैं। अगर आप बीच के कई और फिगर्स देखें, 2022 का फिगर है 111, जबकि आपकी घोषणा 2022 के लिए थी 175। प्रधानमंत्री का घोषणा है 2030 में 500 पहुंचना। तो आप कैसे पहुंचेंगे, कैसे पहुंच सकते हैं? कोई बटन दबा के नहीं पहुंच सकते। इसके लिए सिर्फ कानून और कानून में कुछ प्रावधान करने से हल नहीं निकलेगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि statistics, friends, are not always lies, nor damned lies. It is true that like certain articles of clothing, what they reveal is interesting, but what they conceal is vital. But they are sure, firm, factual indicators of where we are and where we are going. It is clear that of all our declarations, all our promises at United Nations meetings, international conferences, international visits, targets spoken are not fulfilled each year, and in fact cannot be fulfilled is known when we make the declaration. We cannot reach 500 gigawatts by 2030, figures I have just given. In 2022, we are 111 against the figure given of 175. We cannot decrease carbon emissions by doubling our investment by 15 to 20 billion US dollars per year. Where will we get the money? You have yourself rightly recalibrated your 2050 promise to achieve net zero emissions. You have also already yourself made it 2070. Friends, all this and the legislation in particular ignores the holistic setting, what I call the elephant in the room. That elephant in the room, and we've just finished the wildlife bill, is the larger issue of climate change and energy transition. One recent report estimates that climate change adverse movement costs you 3 to 10% of GDP annually. We don't even have methods of evaluating it, how much GDP diminution is happening every year because of climate change. We cannot forget that climate change hits 3 rights the most and first. First, the right to life. Second, the right to food. Third, the right to health. The Center for Environment notes that on a climate change agenda, out of the 17 objectives of India published, 15 will not be met by 2022 end. These are hard facts, researched things. I'll give an example. Vital issues like 100% source segregation of dirt and of material. Our forest cover has crawled
upwards by 0.6% from 2013. Our target was 33%, we are at 24.6%. These are hard, real facts. Even though I am supporting the bill, it is important for you to do something about them. और इसमें कथनी और करनी में जो भी आपके फ़र्क हैं, सब्सिडी घटाना, टैक्स बढ़ाना, उस कथनी और करनी की जो गैप है उसको आपको भरना पड़ेगा। आपने अभी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाया, उसका बजट 1800 करोड़ से 1000 करोड़ कर दिया। तो क्या फ़ायदा हुआ रिन्यूएबल एनर्जी की बात करने का? Sir, let me end by saying, we all know nature does provide a free lunch, but only to a limited extent. That is, if we control our appetite. We also know Gandhiji's equation between need and greed. We know well that the world is only marginally given by our fathers. It is largely borrowed from our children. The bill needs to address the practical, statistical, holistic ground concerns which I have outlined most humbly. The bill needs to provide an impetus not merely by the cold letter of the law, but by actual nitty-gritty. How, for example, will green buildings come up in the construction sector? By merely amending construction codes. We all know that a green building costs 5 to 15% higher investment when made, and its recovery of that investment takes 3 to 5 years gestation period. Who will do it? Why will a builder do it? Why will an owner do it? The bill, while rightly providing for carbon trading, a very good move, has not created or enabled either a regulator or a intermediary or a stock exchange. So the expectation is that I will save carbon and footprint and get a credit certificate and I will sell it to my learned friend here. How it will happen, what is the infrastructural structure for it, I don't know. The bill doesn't tell us. Entrusting this whole crusade for survival, it is a crusade for survival, make no mistake about it. To whom? To Ministry of Power and not to the Ministry of Environment. Is there not a clear conflict of interest? I don't want to mean it seriously, but in the old days there used to be a joke that you might want to make Dracula the head of a blood bank. Now, Ministry of Power working to reduce carbon emissions is a major conflict of interest, sir, and at least you should centralize. It's your own government, it doesn't matter. At least give it to the MOEF with some independence to stand up for environmental issues. So, Honorable Chairman, it is a good bill. It's a good start at least, but much more needs to be done outside of the bill, some more inside the bill, and the maximum to bridge the hiatus on the ground. All such initiatives are laudable, even if partial, incomplete or imperfect. And certainly, this does fall in all the three categories. Otherwise, if we don't even take this initiative, Mr. Suzuki, the car maker, rightly put it. He said, if you don't give this primacy, you will be like a giant car heading towards a brick wall while everybody is arguing over where they should be sitting. We have been given a warning by science. We've been given a wake-up call by nature. It is up to us to heed these calls by legislation as much as by executive action. And I hope that will be done. Thank you very much indeed. Thank you, both Singhvi ji. Now, Mr. Sushil Kumar Modi ji.